बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, इंग्लिश लिटरेचर एंड हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के MCQs में आपको खुशामदीद कहा जाता है। जैसे हमने पहले लिंग्विस्टिक पे काम शुरू किया था, साथ साथ जो है इंग्लिश लिटरेचर के MCQs पे भी मैंने काम शुरू कर दिया है। उम्मीद है कि आपको इससे बहुत ज़्यादा सीखने को मिलेगा और साथ साथ आप जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स को भी खूब तैयार करते रहें। चलते हैं हम आज के लेक्चर की तरफ। सबसे पहला हमारे पास है विच पोएम एंड्स आई शैल बट लव दी बेटर आफ्टर डेथ। हाउ डू आई लव दी। Which poet is considered a national hero in Greece? Lord Byron. Towards the close of which century did English replace French as the language of conducting business in parliament and in court of law? In 14th century. Which king began a war to enforce his claims to the throne of France in 1336? Edward III. Only a small proportion of medieval books survive, large numbers having been destroyed in the dissolution of monasteries in the 1530s. What is the first extended written specimen of Old English? A code of laws promulgated by King Ethelbert. Who was the first English Christian king? Ethelbert. ये बहुत important है और बहुत दफा ये पूछा गया है। In Anglo-Saxon heroic poetry, what is the fate of those who fail to observe the sacred duty? तो इसका आंसर है everlasting shame. How would be called the English Homer and father of English poetry? Geoffrey Chaucer. What was vellum? Parchment made of animal skin. Next है Christian writers like the Beowulf poet look back on their pagan ancestors with pagan age, जो हम कहते हैं पत्थर का ज़माना जो है। तो बेवुल्फ जो है ये एंग्लो सैक्सन पोइट्री के साथ रिलेट करती है और सबसे पहली पोएम शुमार की जाती है। तो इसका आंसर है एडमायरेशन एंड एलिजिक सिंपैथी। Which of the following statements is not an accurate description of all English poetry? तो मैं सिर्फ आंसर ही आपके लिए लिखा है ताकि आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो इसका आंसर है रोमांटिक लव इज द गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ मॉरल कंडक्ट। Which of the following best describes retort a favorite rhetorical device in all English poetry? इसका आंसर है ironic understatement. How did Henry II, the first of England's king, acquire vast provinces in southern France? His marriage to Eleanor of Aquitaine. जितने भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं ये पास पेपर से लिए गए हैं, उनसे कलेक्ट करके जो बार बार रिपीटेटिवली आते गए हैं उनको यहाँ पे ऐड किया गया और हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की मुख्तलिफ जो बुक्स हैं उनमें से लिए गए हैं। Which of the following languages did not coexist in Anglo-Norman England? तो लैंग्वेज थी डच। Which 12th century poet or poets were indebted to Breton storytellers for their narratives? Mary de France, Chrétien de Troyes. तो हमारे पास जो नेक्स्ट स्लाइड है, to what did the word of Roman from which the genre of romance
emerged initially apply. A work written in the French vernacular. Popular English adaptations of romances appeal primarily to the clergy. ये स्टेटमेंट जो हो गई. What is the climax of Geoffrey of Monmouth, the history of the kings of Britain, the reign of King Arthur? रेड में जो है आंसर दिए हुए हैं. Ancient Rival is manual of instruction for women who have chosen to live as religious recluses.